ना। सो इट जस्ट बिकॉज सैटरडे का तो ऑफ नहीं, पता मंडे तो रहेगा, वैसे होली है इसीलिए सैटरडे का भी खैर आपको दिया है। तो ठीक है। चलो ठीक है, देखते फिर तो नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट हो जाएगी वो, सीधे सीधे। तो इट मस्ट बी ऑन द होल ऑफ फिजिकल सेटिंग्स देन। ठीक है, फिर होल फिजिकल सेटिंग्स पर टेस्ट ले लेंगे हम। और ये मैसेज कब कल आया है? एनीथिंग टास्क? नो। मैप तो किया है, ड्रॉ किया है। एंड और भी कुछ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, रीजंस, कि वो वहां पर ही क्यों लोकेटेड है। हाँ तो कोई, क्या देखो क्या होता है ना, जैसे कि नो डाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस है, ठीक है। बट फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस है, उसके बाद ऑयल रिसोर्सेज भी है। बट स्टिल फिर ऐसा क्यों नहीं है कि जैसे मुंबई में, मुंबई है, ठाणे है उसके बगल में, फिर ठाणे में क्यों नहीं, मुंबई में ही क्यों? कोई एक तो स्पेसिफिक ऐसा रीजन हो सकता है ना। हाँ मतलब वो गवर्नमेंट की लोकेशन, अब इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अगर मिलते हैं तो सी इट इज नॉट मच नीडेड कि मतलब एग्जैक्टली रीजन ही चाहिए, क्योंकि अब किसी भी प्लान को एस्टेब्लिश करने के इंटरनल पॉलिसी डिसीजंस होता है। सो द थिंग इज क्या है यहाँ पे, इफ अगर रीजंस मिलते हैं, जैसे वाई जामनगर, वाई कोयाली, वाई पारादीप, और वाई बेसिकली एनी ईस्टर्न या मथुरा, मथुरा फिर मथुरा वाले रीजन में क्यों है, ये भी तो रीजन पता होना चाहिए ना हमको। यस तो अगर पॉसिबल है, अगर वो मिलते हैं, तो यू गाइज आर सपोज टू राइट दोज रीजंस। जैसे कल अगर आपने देखा है कि मतलब वैसे काइंड में रीजन में नहीं, बट कल मैंने वैली ऑफ इंडिया वाला पॉकेट टॉपिक दिया था, है ना। और उसमें ऑलमोस्ट 18 to 20 वैलीज दी, मैंने दिए थे इन्फॉर्मेशन। अब देखो उसमें वही लिखना था कि उस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि फिर कौन सी डीपेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है, कितने फीट पे है, माउंटेन है, कैसे है, ये वाली इंफॉर्मेशन सेम इस केस में भी, कि अगर किसी प्लान के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन है फॉर इट्स लोकेशन और एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर वो लिखना है, और नहीं मिलता है तो एनीवे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस तो वैसे भी है ना। तो दैट वे। वाई बिकॉज जब इंडस्ट्री रहेगा तो इंडस्ट्री में ये ऑयल रिफाइनरीज की लोकेशंस, ये वाली चीजें आपको हेल्प करेगी, सो शुड हैव दैट आइडिया। चलो 2 मिनट, कल जो हमने डिस्कस किया था, डू रिकॉल दो स्टेप्स? एक ही मैप कहा था मैंने।
Yes. Should have done. So next point that we are going to discuss now, that is groundwater resources में groundwater resources अभी हम discuss करेंगे. See, energy, minerals, metallic, non metallic, ferrous, ये सारे कुछ चीजें हमने कर ली है. देन अब रहेगा ग्राउंड वाटर, लैंड रिसोर्स भी कर लेंगे एक. तो पहले क्वेश्चंस लो ऑन ग्राउंड वाटर, दोस PYQs on those were asked on this topic. Examine the critical issues of, examine the critical issues of groundwater resources in India. Groundwater resources in India 2021. Yes, good morning, Manvendra. Groundwater contamination. Groundwater contamination in the fast expanding urban India. In the fast expanding urban India appears to have, expanding urban India appears to have become appears to have become a major public health issue. A major public health issue. Discuss.
2022. Examine the major causes of. Examine the major causes of groundwater depletion in India. Groundwater depletion in India. 19. Account for the account for next question. Account for the geographical distribution of groundwater resources of India. Account for the geographical distribution of groundwater resources of India. Of groundwater resources of India. Full stop. How serious is its depletion? How serious is its depletion? Is its depletion in recent decades? In recent decades. 2015. So, 2015. Analyze, last question. Analyze the spatial patterns of. Analyze the spatial patterns of the utilization of groundwater. Analyze the spatial patterns of the utilization of groundwater for tube well irrigation. For tube well irrigation in different parts of India. In different parts of India. Nine- 1989. ठीक है, तो देखो PYQs पूछे हैं मेनली सेंटरिंग अराउंड इश्यूज विद द ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, यही इश्यूज के अराउंड ये क्वेश्चन पूछे इन दी PYQs. सो सबसे पहला तो पॉइंट, अब इसमें हम क्या देखेंगे, पहले तो ग्राउंड वाटर होता क्या है, देन ग्राउंड वाटर के डिफरेंट मीन्स क्या होता है, देन अगेन द ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस एक कंसेप्ट है, और उसके बाद एक और ग्राउंड वाटर रिपोर्ट देख लेंगे 2023 की. सो ये जो करंट का कंटेक्स्ट आ जाएगा उसमें यू गाइस कैन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन देन. तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, ग्राउंड वाटर क्या होता है?
आकाश इज लाइक लॉजिकली आकाश कुछ आंसर तो देगा. So groundwater is simply that water that lies like in the aquifers or rock layers below the or in the earth crust. That is simply a groundwater. ठीक है. अब ग्राउंड वाटर दैट इज एज वेल नोन एज सबसर्फेस वाटर. ग्राउंड वाटर इट इज एज वेल नोन एज सबसर्फेस वाटर. तो it is simply again the same thing. ये है अर्थ क्रस्टल पार्ट एंड दिस क्रस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के अपर क्रस्ट का ही पार्ट होगा. कोई मतलब ऐसे नहीं कि क्रस्ट मेंटल कोर तक चला जाएगा. नो, यू विल फाइंड इट इज मेनली लाइक अप टू this crustal part, upper crustal part and ranging like few further kilometers. ऐसे भी नहीं है कि बहुत 10 20 50 किलोमीटर होगा. Hardly you'll find few kilometers. The reason being, see this दो टर्म्स होते हैं फिर से टाइप्स ऑफ रॉक्स में. एक होता है एक्वीफर्स और एक होता है एक्विक्लूट्स. एक्विक्लूट्स. तो एक्वीफर्स आर सिंपली दोज rocks, those are having capacity to hold water. जिस रॉक में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, these are simply aquifers. And those rocks which are not having capacity to hold water or allow its easy passage, that is simply known as aquiclut. ठीक है. तो अब ग्राउंड वाटर अर्थ के सरफेस में कहा होता है. सो ये जैसे प्रेजेंटेड है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्मेट में होगा, ऐसे नहीं है. ठीक है. इट इज रैदर मे बी लाइंग इन ए होल वाटर स्ट्रक्चर इटसेल्फ. ठीक है. तो जो एक मॉइस्चर लेडन रॉक होगा, दैट इज सिंपली दैट ग्राउंड वाटर रीजन इटसेल्फ. ओके. तो ऐसा कोई इसका सेपरेट पाइपलाइन ही होगा, ऐसे नीडेड नहीं है, बट हो सकता है like on many of the instances. So it is simply a water that lies in the aquifers of the upper crustal part. That is what groundwater is. इसको और भी like as like define तो बहुत easy way में करना ही है, तो यही है that water that lies below the earth surface. बट जब टेक्निकली हम किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो विल ट्राई टू ऐड सम टेक्निकल वर्ड्स और कंसेप्ट्स देयर. नाउ अब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस यू विल फाइंड, वैसे ग्राउंड वाटर इज आर रादर ए सोर्स ऑफ emergency. Yes, it is a source of an emergency because groundwater is that kind of reserves which we are supposed to use only during the case of emergency. जैसे बेंगलुरु में क्राइसिस हुआ है वाटर का, तो इस क्राइसिस को डील करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि ग्राउंड वाटर यूज करें. बट क्या हो गया आज के डेट में प्रॉब्लम, दैट वी आर यूजिंग दिस ग्राउंड वाटर एज लाइक ए डेली और रेगुलर मीन्स ऑफ वाटर सप्लाई, एंड दैट इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. ठीक है. सो ग्राउंड वाटर इट इज ए सोर्स ऑफ emergency or storehouse of emergency. It is available in aquifer below the water table. Water table मतलब कि टॉपमोस्ट लेयर है कि जहां ये जो ग्राउंड वाटर की लेयर होगी, ठीक है, जैसे ओशन सी लेवल होती है वैसे ग्राउंड वाटर की जो लेवल होगी दैट इज नोन एज वाटर टेबल. वाटर प्रेजेंट इन दी पोर स्पेसेस. अब देखो एनी रॉक है, इफ यू कंसीडर इट जियोलॉजिकली, so this rock is actually a aggregate of minerals, various minerals है जो कि different bonds में रहेंगे, and what इनके बीच में कुछ gaps रहेंगे. ठीक है, या rock layers के बीच में या rock structure के बीच में भी क्या होगा, gaps होगा. अब this gap or small openings are known as pores.
They are known as pores. When these pores are like well interconnected this way, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, it will rather provide a kind of passageway from or by which this water will rather move downward. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द रॉक टू इट्स बॉटम और मे बी फर्दर इन द नेक्स्ट लेयर इज नोन एज permeability. So permeability is simply that ability or capacity of the rock to allow the movement of nutrients and water from its top layer to the bottom layer by means of pore spaces. That is simply the permeability. Now, अब किसी भी rock में then you will find water present in the pore spaces of permeable rock. Permeable rock मतलब ये होगा जो ये movement allow करेगा, right? So pore spaces of permeable rock below the surface is called as ground water. I hope ये definition और इसका जो meaning है इस concepts का you guys are now pretty much clear. So have few lines about this ground water और ये जो concept है उस पे ये तो note down कर ही लेना later, but और भी कुछ additional point. Groundwater is also known as subsurface water. Subsurface water. It is a water. It is a water lying in the pore spaces. It is a water lying in the pore spaces of the aquifer, of the aquifers, of the aquifers in the upper crustal part. In the upper crustal part. ये सिंपली crustal part भी लिखे तो कोई इशू नहीं है. It is next line. It is also known as a reserve for an emergency. A reserve for an emergency or a storehouse for an emergency or a storehouse for an emergency as it is expected to be used during emergency or water scarce situation. Water scarce situation. SCARES scarce situation. फिर उसमें लिखना permeability. It is the ability of the rock. It is the ability of the rock to allow the movement of water. To allow the movement of water from its top to bottom. From its top to bottom by means of top to bottom by means of pore spaces. Interconnected pore spaces. जैसे
पोर स्पेसेस भी लिख के दिया तो भी कंप्लीट ही है, बट फिर भी इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस. एक्वीफर, नेक्स्ट एक्वीफर, परमेबिलिटी लिख दी हमने. एक्वीफर, it is the rock, it is the rock that holds water, that holds water. Aquiclute, aquiclute, exactly opposite to the, exactly opposite to the aquifer. That do not hold water. Means exactly opposite to the aquifer, comma, means that do not hold water or groundwater. Water table, water table. It is the topmost layer of, it is the topmost layer of groundwater, groundwater. Layer of the ground water. अब इसमें वैसे इतना नीडेड नहीं है. सैचुरेशन जोन क्या होता है? सैचुरेशन जोन इज सिंपली व्हेन ऑल द पोर स्पेसेस ऑफ रॉक्स आर फिल्ड विद द वाटर. ठीक है, किसी एक रॉक में जितनी भी कैपेसिटी थी पोर स्पेसेस की वो सारी फील्ड हो चुकी है. दैट इज व्हाट इज सैचुरेशन रॉक, सैचुरेटेड रॉक. और जब नहीं होगा तो इट इज अनसैचुरेटेड रॉक. ठीक है. अब ये सारे जो टर्म्स है यू विल फाइंड कि दिस आर इंपॉर्टेंट जब ग्राउंड वाटर स्टडी होती है. ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर स्टडी होती है तो यू विल फाइंड कि ये सारे चीजों से डील करना होता है एंड कीपिंग दोस थिंग्स इन माइंड. नाउ अब देखो सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर. अब ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली ए मिरर ऑफ द सरफेस वाटर. ठीक है, द ग्राउंड वाटर it is a mirror or more appropriately the reflection of the surface water. तो सोर्सेस में लिखो, सोर्सेस की हेडिंग डालो, उसमें बाकी एक और 2-3 लाइन लिख देंगे हम उसमें. सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर. Groundwater in a real sense. Groundwater in a real sense. A mirror. A mirror. Oblique reflection of the surface water. Reflection of the surface water. Which means that surface conditions are key determinant of surface conditions are a key determinant of groundwater, nature of groundwater, key determinants of nature of groundwater, its depth, quantity, and quality. Quantity and quality. Thus, next line में लिखना thus rainwater, river, ponds, lakes, glaciers are the sources
एक्सेट्रा, ठीक है, और भी सोर्सेस होंगे, एक्सेट्रा आर द सोर्सेस that those sips through the soil, those sips through the soil and fill the empty spaces, and fill the empty spaces and cracks below the ground, and cracks below the ground. This process is known as infiltration. This process is known as infiltration. Next line. Apart from the surface sources, uh, oceanic body, more appropriately sea body रहेगा, क्योंकि ocean तो large mass है. Above sources, ocean body also contributes also for groundwater storage, but usually leads to saline infiltration, saline salt वाला, और saline SALINE, saline infiltration. तो ये थे सोर्सेस फॉर द ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट है, देखो जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे हम, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस होगा, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर रीजन्स इन इंडिया, या जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस. ओके, इस पे वैसे एक या दो क्वेश्चन आए, नॉट डायरेक्टली विद द सेम नेम, बट जब भी मेंशन आया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तब आपको इस वे से इसको आंसर कर लिखना है. ठीक है, अब देखो, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट ग्राउंड वाटर प्रोविंस इट मींस लाइक जैसे जिसको हम स्टेट बोलते हैं, या कोई एक रीजन है ना. और बट ये रीजन कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, ये रीजन कोई एग्रीकल्चर रीजन नहीं है, ये रीजन कोई कल्चरल रीजन नहीं है. नाउ द ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट दैट इज बीइंग टेकन ओवर हियर, ये है ग्राउंड वाटर. कि एक रीजन में जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर and how long, right, with quantity, quality, its nature, it is connected with. तो एक किसी भी रीजन में अगर इंटरकनेक्टेड ग्राउंड वाटर होगा, दैट इज सिंपली लीड्स टू ग्राउंड वाटर प्रोविंस इन इटसेल्फ. देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज एन एरिया और रीजन इन विच जियोलॉजी एंड क्लाइमेट, जियोलॉजी जिसको हमने सरफेस वाला फिनोमेना दिया था, एंड क्लाइमेट रेन वाटर combine to produce groundwater conditions consistent enough to permit useful generalization. So groundwater province is a uniform region where ग्राउंड वाटर का एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखेगा इन सिंपल टर्म. और इफ यू वांट टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ दिस क्लाइमेट एंड जियोलॉजी, सो इट जस्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ climate and geology which leads to a combined result as a whole region. That is simply a groundwater province in itself. तो ग्राउंड वाटर प्रोविंस बनने में विल फाइंड बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं. रॉक फॉर्मेशन ranging from the ages in the Archean to the recent control the occurrence and movement of groundwater. बहुत सारे फैक्टर्स होंगे. सो जॉइंट रॉक्स के जॉइंट्स क्या है, रॉक्स में फ्रैक्चर्स कितने हैं, फॉल्टिंग प्रोसेस कौन सी है, प्लेट मूव टेक्टोनिक मूवमेंट्स कैसी है, देन क्लाइमेट वाले फैक्टर्स कैसे, ऑल दोज मैटर्स for the case of this development of groundwater. Topography and rainfall virtually control the runoff and
ground water itself. Surface water is what again that runoff वाला water. Now देखो अब इंडिया में अब अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे ठीक है एट अगेन सब सरफेस एब्सोल्युटली यू विल फाइंड there are some groundwater basins or groundwater province those are absolutely interconnected with each other. So there are 8 different provinces of groundwater. ठीक है 8 different provinces बना रखे हैं या हमने आइडेंटिफाइड किए अभी तक ऑफ ग्राउंड वाटर. अब ये प्रोविंसेस कैसे है? So these provinces are like simply evolved during different period of time. जैसे कल हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखी थी है ना जिसमें हम गोंडवाना कार्बोनिफेरस ये सारी कुछ जो डिफरेंट एजेस है उस टर्म में देख रहे थे. और देखो सिंपल सा केस है जैसे अर्थ की ओवरऑल लाइफ स्पैन है 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर्स. It means Earth must have went through the different geological conditions, different atmospheric conditions, and like those things. तो क्या होगा हर किसी एज में कुछ कंडीशंस ऐसे बनेगी that lead to a different stage, different nature, quantity, quality, and all those aspects about the groundwater. So keeping this thing in mind, now we are having 8 different groundwater provinces. देखो पहला प्रोविंस है प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन प्रोविंस. ठीक है प्री कैम्ब्रियन ये टाइम पीरियड है. ठीक है क्रिस्टलाइन ये टाइप ऑफ रॉक जो उस टाइम डोमिनेंट था जैसे आर्कियन रॉक्स more commonly gneiss and schist. Gneiss, granite, schist, these are much common rocks over in this pre-Cambrian time. जब इंडिया एज ए लैंड मास या अर्थ एज ए सरफेस इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था तो हार्ड रॉक स्ट्रक्चर्स है. नाउ इट कवर्स लाइक द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ठीक है ये यहाँ पे इसका पार्ट आएगा और ये यहाँ इसका एक पार्ट आएगा. ठीक है दिस वन. It covers the state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Bundelkhand, Vindhyas, and that particular region. And this formation is a discontinuous water bearing. अब ये बना कब रहेगा? ये जो बेसिन बना है वाटर नहीं राइट ये बेसिन कब बना है? तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या बेसिन या रॉक स्ट्रक्चर बना है ड्यूरिंग pre-Cambrian time and that is made up of hard metamorphic rocks, gneiss, schist, granite. Okay, and this rock thus is what again क्योंकि conditions differ होती गई being a long duration of time you will find is a discontinuous water province. Next to pre-Cambrian crystalline there is pre-Cambrian sedimentary province as well. अब देखो प्री कैम्ब्रियन जो टाइम था उसी टाइम पे हार्ड मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस से क्रिस्टलाइन रॉक्स बन गए and during the same time as well maybe like kuch temporal difference hoga but it as well lead to the development of sedimentary basins. This sedimentary basins then leads to sedimentary provinces. Can find two Kadapa, then Vindhyan, Raipur, Western Rajasthan basin where see rocks are actually now in sedimentary types of rock and sorry water actually is in sedimentary type of rock and hence इस वाले basin में you will find water rich tracts are observed. तो यहाँ पे कंपेरेटिवली हो सकता है कि वाटर का कंडीशन ज्यादा रहेगी या स्टोर ज्यादा रहेगा बट ये होगा ज्यादा डेप्थ में क्योंकि प्री कैम्ब्रियन टाइम पे बना है मतलब बहुत पहले बना है तो यू विल फाइंड हैविंग ए मच डेप्थ. Comprises of sandstone, conglomerate, limestone, and slate. These are all sedimentary rocks in themselves. Next जो प्रोविंस है देखो प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन प्री कैम्ब्रियन सेडिमेंट्री. ठीक है ये सेकेंड वाला यहाँ पे लिखा दिस वन कंटिन्यूअस है. नाउ द थर्ड इज वेयर दिस वन थर्ड वाला कहा इसका एक्सप्लेनेशन गोंडवाना. ओके so this basin see that is a Gondwana sedimentary basin जिसमें हमने कल देखा था कि कोल फॉर्मेशन हुआ था कोल राइट the compression over here you'll find this Gondwana sedimentary province is there जिसमें sedimentary rock again is rather
ऑब्जर्व्ड। अब इसमें ऐसा भी हुआ होगा गोंडवाना टाइम में crystalline rock, but that crystalline rock later transformed or covered by any other activity, इसीलिए फिर क्या हुआ, ये हो गया covered. Now it includes like the Barakar and Godavari basin, this one over here, छत्तीसगढ़ तक भी जाएगा, झारखंड में भी जाएगा, बराकर रिवर दैट इज इन झारखंड, rich in sandstone and comparatively poor in the shell rock. And as it is though, you will find, say, moderate groundwater content is observed. Moderate groundwater content is observed. नेक्स्ट है डेक्कन ट्रैप प्रोविंस। देखो याद हो तो याद रखना, कोई बहुत ज्यादा सच पूरी इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड, बट जब भी अगर ड्रॉ करोगे तो दैट विल एटलीस्ट गिव लाइक वन एडिशनल लाइक मार्क और 2 मार्क्स फॉर यू गाइस। डेक्कन ट्रैप कितना है, 1200 मीटर थिक है, तो वाटर की जो लेवल रहेगी, बट अब डेक्कन ट्रैप इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट एंड दिस बेसॉल्ट इज ए impermeable rock, permeability इसकी कम है, and that is the reason generally Deccan province is water deficient, not very rich in terms of, it is rather a low groundwater storage. नेक्स्ट जो बेसिन आएगा, जैसे इसको यहां से लेते हैं, फिफ्थ वाला सेनेजोइक सेडिमेंट्री बेसिन ड्यूरिंग सेनेजोइक टाइम नाउ, ठीक है, क्रेटाशियस जो जुरासिक और ट्रासिक 3 पीरियड थे, उसके बाद में फिर सेनेजोइक आया, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड। सो वी आर बेसिकली इन दी सेनेजोइक टाइम नाउ। मेसोजोइक वाला हमारे इंडिया में कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। सो सेनेजोइक सेडिमेंट्री बेसिन मेनली अलोंग दिस कोस्टल पार्ट एंड इक्वली यू विल फाइंड इसके यहाँ पे कुछ पैचेस मिल जाएंगे। तो दिस सेडिमेंट्री मतलब कोस्टल रीजन्स पे टर्शियरी सैंडस्टोन, टर्शियरी टाइम में sandstones of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, several aquifers in the eastern coastal region. But अब इसका प्रॉब्लम ये है, this is rather now saline contaminated. This water is partly saline contaminated. The reason being क्योंकि ये आ रहा है कोस्टल रीजन पे, और कोस्टल रीजन पे वाटर इनफिल्ट्रेट करेगा एंड इट लीड्स टू और एडिशन ऑफ सॉल्ट इनटू द वाटर. Next basin, it is say distributed over in this small region over in the Deccan Plateau itself, that is Cenozoic fault basin. ये जो Cenozoic fault basin है, ये है of Tapi and Narmada river fault basin, क्योंकि नर्मदा और तापी दीज आर टू डिस्टिंक्ट रिवर है जो कि अगेंस्ट दी फ्लो जा रही है जनरल स्लोप डायरेक्शन, और उसी में यहां पर फॉल्ट बेसिन वाला ग्राउंड वाटर बनेगा. सो दैट इज व्हाट सेनेजोइक फॉल्ट बेसिन, रिफ्ट वैली जोन्स ऑफ नर्मदा, पूर्णा, तापी. ठीक है, तापी आर गुड सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर. 80 to 160 मीटर थिक alluvial cover is observed. Next जो province है, that is highly water rich tract in India, ground water rich tract as such, that is Indus, Ganga, Brahmaputra ground water province. अब सिंपल है, ये one of the youngest topography भी है, one of the youngest topography है, that as again a formation led by the river deposition. इसीलिए जो रॉक्स है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, दोस अलाउ द इजी इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. एंड फर्दर दिस इज द लार्जेस्ट एंड रिच ग्राउंड वाटर प्रोविंस. 3 different belts, Bhabar and Talus, Tarai, and then fine grain deposition at Delta. It offers the best water storage over in the Ganga Brahmaputra alluvial province. आज भी देखो, मतलब आज तो खैर नहीं, अब तो कम हो गया, बट दिल्ली में या पंजाब हरियाणा में यू विल फाइंड के ग्राउंड वाटर कभी कभी ऐसा भी होता था कि 5 to 10 मीटर्स पे ये ग्राउंड वाटर बोरवेल पे मिल जाता था. आज तो खैर अभी ये 70, 80, 100 मीटर्स पे चला गया. बट इन साउथ इंडिया इफ यू कंसीडर, ये सारे जो प्रोविंसेस देख रहे हो, ये सारे प्रोविंसेस क्या है, एक तो हार्ड रॉक से बने. तो एज दे आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, तो यहाँ पे आपको वैसे भी जाना पड़ता है 100 मीटर, 120 मीटर
150 मीटर, right? It just because these are of Archean or hard metamorphic rocks. But in comparison, this Ganga basin, okay, Ganga, Brahmaputra, and those basins are rich water tract even in groundwater terms. Then last province is Himalayan province, groundwater province. अब हिमालय में देखो, it is a group of highly folded and faulted sedimentary rocks. अब यहाँ पे क्या है ना, एक वैसे ये रॉक स्ट्रक्चर देखो क्या है, एक्चुअली हिमालय इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. इसके रूट में है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये इसके रूट्स में मेटामॉर्फिक रॉक. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि रिवर्स ने डिपोजिशन स्टार्ट किया, नॉट एट द पीक बट वहां से एंड फर्दर ऑनवर्ड यू विल फाइंड. तो हिमालय के टॉप लेयर पे ये जो सरफेस होगा, ये रॉक होगा, दैट इज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. This is metamorphic rock and there is a sedimentary rock. So what you'll find, this Himalaya is having a limited groundwater province. ऐसे भी नहीं कि हिमालय में आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर मिल जाए, नो. हिमालय में यू विल फाइंड जहां पे रिवर फ्लो कर रही है उस बेसिन में आपको ग्राउंड वाटर अच्छा मिल जाएगा. ये जहां पे स्प्रिंग्स है, परमेबल रॉक्स है जो झरना बना रहा है या स्प्रिंग्स बना रहा है, तो देयर यू विल फाइंड ग्राउंड वाटर कंटेंट. अदरवाइज हिमालय इज नॉट वेरी rich in terms of the groundwater. So wherever limestone, sandstone, shales are observed, यहाँ पर क्या होंगे, say this groundwater rich tracts are there. So it means what, इतने पूरे रीजन का ग्राउंड वाटर इज रादर इंटरकनेक्टेड, दिस ग्राउंड वाटर इज रादर इंटरकनेक्टेड, दिस ग्राउंड वाटर रादर इज इंटरकनेक्टेड. आर यू गेटिंग दिस थिंग? ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस. अब इसमें देखो एक इसके साथ प्रॉब्लम्स भी समझ लो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द ग्राउंड वाटर. अब अगर ग्राउंड वाटर में फॉर एग्जांपल यहां पर है कानपुर की लेदर इंडस्ट्री. अब कानपुर की लेदर इंडस्ट्री क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल, या कोई भी और इंडस्ट्री हो सकती है, कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है. अब इसका प्रॉब्लम क्या है, दैट एज दे आर नाउ लीडिंग टू ए पोल्यूशन इन ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर इज रादर ए इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसिस. जैसे रिवर में मान लो अगर आपने पोल्यूशन डाल दिया गंगा में ओरिजिन से, तो पूरे उसके रीच ट्रैक्ट पे है, जो फर्दर ट्रैक्ट पे है, यू विल फाइंड दैट इज रादर पोल्यूटेड. Same goes with the groundwater as well. So when or someone like, or say maybe intentionally or not unintentionally pollutes the groundwater over in the region, probability is that कि ये पूरा groundwater province pollute हो सकता है, and that is again a major cause of concern. ठीक है. तो बाकी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स तो इतने नीडेड है नहीं हमारे लिए. दिस आर व्हाट द ग्राउंड वाटर प्रोविंसेस. अब इसकी कुछ एक रिपोर्ट है, those will be discussing. फिर इसके issues, that those are already mentioned there. Now have that report of Ministry of Jal Shakti. You need to write dynamic groundwater resource assessment. Dynamic groundwater resource assessment report. Dynamic groundwater resource assessment 2023. 2023. by जल शक्ति मिनिस्ट्री. ठीक है, ये 2023 की रिपोर्ट है, जल शक्ति मिनिस्ट्री. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जल शक्ति मिनिस्ट्री, और इसके अंडर में आती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक्ट से बना है, एंड वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज. जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं बनाया है, उसकी एजेंसी जो रहेगी CGW है, WB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, एंड स्टेट्स एंड यूटीज, डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज कंट्रीब्यूटेड. Highlights of the report. What are the highlights of the report?
First, increase in annual groundwater extraction. Increase in annual groundwater extraction for the entire country. 241 BCM. 241 capital BCM, billion cubic meter. BCM. Out of 6553. Out of, no, next point. Out of 6553 assessment units. Assessment units. इसका सब पॉइंट लिखना 736 units bracket 11% have been categorized as overexploited. 4793. हाँ, सेकंड ये जो नंबर लिखा था ना 6553 यूनिट्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो लिख रहे हैं हम। तो पहला था 736 यूनिट्स, अब होगा 4793 यूनिट्स। कैटेगराइज्ड एज सेफ। कैटेगराइज्ड एज सेफ। The overall stage of third, अब नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। The overall stage of groundwater extraction has marginally decreased from 60.08% to 59.26%. Next point, 2% of assessment units. 2% of assessment units are categorized as saline, 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 जिसमें salt water contamination है। लास्ट पॉइंट उसी में, रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स टू, इसको सोर्सेस में भी लिख सकते हैं हम, कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 60% ऑफ टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 60% of total annual groundwater recharge. What are the challenges associated? Next वाला point लिखो इसमें, challenges associated. First,
over exploitation of groundwater. Over exploitation of groundwater. 12% of assessment units are categorized as over exploited. उसी में over exploitation में 12% of assessment units are categorized as over exploited, and 3% as critical, and 3% as critical. For example, many in Punjab, Haryana, Delhi, Western UP. For example, many in Punjab, Haryana, Delhi, Western UP. ब्रैकेट लिख सकते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टेट्स, तो इसका कनेक्ट भी समझ आएगा. सेकंड चैलेंज है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. पहला लिखा हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सेकंड चैलेंज आएगा लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. which is dedicated which is dedicated in the water management, which is dedicated in the water management. At various levels of governance. At various levels of governance. Levels of governance. Groundwater pollution. Next. Challenges में groundwater pollution. Due to industrial effluents. Due to industrial effluents. Agriculture runoff and untreated sewage. Agriculture runoff and untreated sewage. According to Lancet study, इसी में लिख सकते हो according to Lancet, LANCET, that is a European journal जिसमें various studies are being published. Pollution in India has led to more than 2.3 million deaths. More than 2.3 million deaths in 2019. In 2019, and more than half million were caused by water pollution. Climate change affects, next point, climate change affects rainfall frequency. Climate change affects rainfall frequency and will affect India's groundwater hydrological balance, and will affect India's groundwater hydrological balance. It then adversely impact on
agriculture cropping pattern, agriculture cropping pattern, industrial production, industrial production, migration and population dynamics, migration and population dynamics, migration and population dynamics, disaster and its governance and its management, disaster and its management, जिससे फिर क्या होगा, हीट वेव्स को डील करना डिफिकल्ट है, ड्राउट को डील करना डिफिकल्ट है, बाकी और भी जो एपिडेमिक्स आएंगे, हेल्थ इमरजेंसी, उनको भी डील करना डिफिकल्ट है. एंड लास्ट चैलेंज, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस. ये सारे रिपोर्ट में दिया है, तो यू कैन कोट दिस रिपोर्ट देयर व्हाइल राइटिंग आंसर. टेक्नोलॉजिकल challenges in terms of its accessibility, in terms of its accessibility, affordability, and awareness among users, and awareness among users. For efficient, for efficient irrigation systems, efficient irrigation system, like drip sprinkler, like drip sprinkler, comma, rainwater harvesting, rainwater harvesting, and and various cultural means, cultural practices, various cultural practices. ठीक है, तो ये देखो रिपोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे कि इंडिया में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कितना क्रिटिकल है. ठीक है, क्रिटिकल. फिर उसमें हमने सेफ जोन और ये सारी कुछ चीजें देखी है, ओवर एक्सप्लॉइटेड. फिर ओवरऑल अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन कितना है वो भी देखा है. देन चैलेंजेस, देन रीजंस फॉर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. देखो ये वाले रीजंस यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे. Population, over-exploitation, then agriculture indiscriminate use, groundwater contamination, surface water pollution and sea water intrusion. जो 4% या 3% ऑलमोस्ट हमारे सेलिन यूनिट्स है. ठीक है, तो ये सारे यू कैन यूज दिस डेटा फैक्ट्स अगेन टू, जो इस रिपोर्ट में दिए, टू मेक दिस कॉस्ट. ठीक है, एंड देन सॉल्यूशंस. व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट? तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए देखो यहाँ पे फिर वही है, avoid flowing rain water, that should be recharged properly, then uses of rainwater, then we have old practices of rainwater harvesting, जैसे बावरिया, दैट इज एमपी राजस्थान में होगा ये बावड़ी. ठीक है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट करने का एक ट्रेडिशनल कल्चर था, काकतिया प्रोजेक्ट जैसे काकतिया. तो यू विल फाइंड वेरियस इनिशिएटिव्स, कल्चरल इनिशिएटिव्स वर देयर इन फैक्ट, जिससे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट ऑलरेडी किया है. ठीक है, तो check dams, then example further अटल स्कीम ऑफ ग्राउंड वाटर एंड बिहेवियरल चेंजेस. ये सारी कुछ चीजें हैं, देख लो इसको एक बार गो थ्रू करना. हाउ टू मैनेज दिस ग्राउंड वाटर.
Done. ठीक है, ऐसा ये नीडेड नहीं है. चलो. तो नेक्स्ट जो भी रिसोर्स होगा हमारा, दैट इज लैंड रिसोर्स. चलो, नेक्स्ट वाला रिसोर्स है अब हमारा लैंड रिसोर्सेस. लग रहा है मुझे ऐसा करना पड़ेगा. काजल जिस हिसाब से क्लास को डिस्टर्ब करती है, लग रहा है कि ऐसी चीज. चलो, सो लैंड रिसोर्सेस इंडिया basically again that country which is having or seventh largest in terms of area. ओवरऑल हमारा जो एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर. 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर. मेजॉरिटी ऑफ दिस लैंड वैसे तो हमारी प्लेन्स को डेडिकेटेड है, फिर उसके बाद आएगा प्लेट्यूस और फिर आएगा माउंटेन्स, हिल्स, राइट, इस वाले रीजन में. तो इंडिया लैंड एज it is absolutely an important resource. It occupies India in total almost like 2.5% of overall globe area. Overall global area 2.5% हमारे पास overall global area है. And it is absolutely an important resource as it offers almost everything. लैंड इट ऑफर्स यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इट्स नॉट मेयरली ए सोर्स की जहां पे आप रह रहे हो. इट रादर ऑफर्स यू फूड एज वेल, water as well. Then again you will find it contribute for the development of atmosphere, your mineral and various resources और बाकी सारी कुछ चीजें, क्योंकि अर्थ का सरफेस तो ज्योग्राफी का कोर है ना. तो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस काउंट.
all plants and depends on the land resources. Now for the case of India, देखो इसका मिलियन हेक्टेयर्स में इसका कन्वर्जन है जो भी हमारे पास लैंड है. So India has a total geographical area about 322 million hectares, and land use varies from region to region and temporarily as well. जैसे हमने रीजनल सिंथेसिस में ये केस देखा था कि दिल्ली में आज यहाँ पर पॉसिबली होगा जहां पे करोल बाग में मार्केट है, ठीक है. मे बी 100 years बिफोर देयर वाज मेयरली अ विलेज ओवर इन द करोल बाग. 500 years ago it may be a case कि यहाँ कुछ हो भी नहीं सकता है, और for sure 5000 years before there was nothing except forest. So what you will find कि land का ये जो use होता है over in the region, it varies space to space and time to time as well. So land use varies space and time, both the aspect. So the land utilization depends upon what? It depends on almost all geographical factors जो हमने सिलेबस में रखे, पेपर 1 में एटलीस्ट वो सारे फैक्टर्स पे होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी कैसी है उस लैंड की या उस टोपोग्राफी की, देन वहां पे क्लाइमेट कैसा है, ओशन का नियरनेस है या नहीं है, दैट अगेन डिफाइंस पोर्ट्स बनेगा या नहीं बनेगा, कोस्टल एग्रीकल्चर होगी या नहीं होगी, या यू विल फाइंड एनवायरमेंट किस वे से है, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज देयर, देन यू विल फाइंड बायोटिक एंड एनवायरमेंट, देन फिर यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है, ह्यूमन प्रेजेंस है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल फाइंड how this land is occupied and developed into a cultural landscape. ये define करेगा this use of land. Okay, basic है वैसे land use वाला ये case. Next, see, अब for the case of India, this land resource is very important. वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको एनवायरमेंट में हमने सॉइल पोल्यूशन के टर्म में ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना. अब इंडिया में जो लैंड यूज है उसको 7 डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, ठीक, दैट इज 7 डिफरेंट कैटेगरीज है. एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको और इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको ऐसा ही कैटेगराइजेशन मिलेगा. दिस आर लाइक से लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ इंडिया. देखो पहले इंडिया में जैसे 1951 में लैंड यूज कुछ डिफरेंट हुआ करता होगा फॉर श्योर, बिकॉज दैट टाइम 70 और 80% और पॉसिबली मोर ऑफ आवर पॉपुलेशन एक्चुअली वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर नेट सोन एरिया मस्ट बी हायर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पुअर था, सो इंडस्ट्रियल और अदर देन एग्रीकल्चर यूज लैंड वाज कंपैरेटिवली लेसर. अब क्या है, यू विल फाइंड, सी now almost इसकी परसेंटेज नहीं दिख रहा है. सी लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इट सीम्स 46% of our land is dedicated again to the agricultural use. नेट सोन एरिया इट मींस कि हमने एग्रीकल्चर के कितने एरिया, सॉरी लैंड सरफेस के कितने एरिया में एग्रीकल्चर कल्टीवेशन किया या सोनिंग की एक्टिविटी, दैट डिफाइंस नेट सोन एरिया of the total geographic area because of the extensive availability of flat terrain in India. That defines the plain or flat terrain. Next, 22% of area of the country is under forest. Again, forest survey report of India जो हमने तभी डिस्कस कर लिया था वेजिटेशन में. Then barren and unculturable wasteland, that is either not पार्ट ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी इटसेल्फ, इसीलिए ये क्या है, ये वेस्ट लैंड है या बैरन लैंड है. दो में हैव सम पोटेंशियल बट इसका यूज नहीं हो रहा है. इट इज ऑलमोस्ट 8.5% ऑफ ओवरऑल एरिया. ठीक है, ये पूरा वेरिएशंस है. ओवरऑल इंडिया में लैंड यूज पैटर्न क्या है हम इसको देखेंगे ईच दिस टर्म. About 5.5% is under non-agriculture use like urbanization, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे इंडस्ट्रीज बनी है या जहां पे पोर्ट्स बने हैं या जहां पे कुछ और लोकेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, you'll find like houses, industries, ports, harbors and those way. Rest of the area is under tree cover or tree crop, groves, permanent pastures and grazing lands. So if you consider overall 100% of India's land mass,
Majority of that land mass is dedicated to net sown area, followed by the forest, then barren and unculturable wasteland, then उसके बाद आएगा non agricultural use, industry, houses, urbanization, those way, and the rest is for sacred groves, permanent pastures और बाकी जो यूजर्स में आएंगे। ठीक है, तो देखो जब फिर लैंड रिसोर्सेज पे अगर कोई क्वेश्चन एड्रेस करोगे, यू नीड टू ड्रॉ दिस पाई चार्ट देयर, राइट। इसकी वैल्यू यहां से ले लो इस वाले एंड से और यहां पे इसको कनेक्ट कर लो। बाकी इन दिस फर्दर पीपीटी देखो हर किसी टर्म की मीनिंग दे रखा है और उसका एक जनरल इंफॉर्मेशन एज वेल। जैसे नेट सोन एरिया, टाइम है 58। नेट सोन एरिया, that is the physical extent of land on which crops are sown and harvested, that is known as this one। 1951 में ये थी 118 million hectares which is now increased to 141 million hectares। ठीक है, नेट सोन एरिया हमारा जो इंक्रीज हुआ है। अब ये मत कंसिडर करना कि पहले से तो ये इंक्रीज हुआ है, नो। पहले जो वेस्ट लैंड थी, जो नॉर्मल पॉपुलेशन पे प्रेशर नहीं था ना, तब यू विल फाइंड इट रिमेन समहाउ वेस्टलैंड। But what happened now? Due to increase in population, अब क्या हो गया? Pressure on agriculture and agricultural density has increased। इसीलिए फिर क्या हो, जो पहले westland थी, now we have keep on adding into the agricultural land itself, and that is how it is leading to। पहले forest cover भी इंडिया में ज्यादा हुआ करता था, वो भी shrink हो गया, वो भी convert हो गया into agricultural land। Then area sown more than once, राइट। एक बार इस पॉइंट्स को देख लो, वैसे ये सारे एक्सप्लेन है इसमें। इट इज एज नेम इंडिकेट दिस एरिया इज यूज्ड टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर। कुछ लैंड की पोटेंशियल कम होंगे, जैसे दैट सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल इनफ, एंड देन यू विल फाइंड कि वहां पर सिर्फ एक क्रॉप इज जस्ट कुड बी पॉसिबल ओवर इन वन सिंगल एग्रीकल्चर रीजन, राइट। सो दैट इज द केस। इट कंटेन 43%, sorry 34% of the net sown area and 16% this type comprises। देन फॉरेस्ट वाला केस ऑलरेडी वेजिटेशन में देखा है कि ओवरऑल कितना परसेंट हमारे पास फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर है, जो कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। आपको ये प्रिंट्स मिले हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया? नो, ठीक है, चलो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ इंडिया की प्रिंट्स आपको मिल जाएगी, मैं आज ही सेंड कर दूंगा, तो कल तक आप, कल या परसों में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो वहां पर यू विल फाइंड फॉरेस्ट वाला केस ऑलरेडी मिला। एनवायरमेंट में दी तो थी मैंने, तो एनवायरमेंट वाली प्रिंट्स ही तो लेनी है, मैंने बोला भी था तब भी एनवायरमेंट वाली। ठीक है, तो एक बार देखना, उसमें फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2019 भी दिया है और बाकी कुछ नए टर्म्स भी थे। दैट डे दैट यू गाइस वर गिवन अ टास्क, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट रीजन, देन डीम्ड फॉरेस्ट, है ना, ये सारी ट्री कवर, ये सारी जो चीजें दी थी, एक बार देख लेना उसको। सो ये वाला सारा कुछ चीजें है अबाउट दिस केस। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू कर लो इस केस को। यस काजल, बस डन हो गया। चलो तो ये पीपीटी देख लेना एंड यू विल फाइंड कि लैंड वो यूज वाला केस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट्स, दो प्रिंट्स मिले होंगे आपको उसी इसी के लिए फॉरेस्ट, तो फिर चलो मैं दे दूंगा, तो आप ले लेना, उसको कवर कर लेना। हाँ, उस पर डीम्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन, ये सारी कुछ चीजें लिखी थी। वो आज नहीं मिलेगा ना, अभी तो दूंगा मैं तब आएगा वो, कल ले लेना उसको। चलो ठीक है, दिस इज अबाउट ग्राउंड वाटर लैंड रिसोर्सेस। और क्वेश्चन भी ट्राई करना कि सॉल्व हो सकते नहीं, ये भी तो देखना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन थोड़ी ना करना है, तो ये भी करो, रिवाइज भी करो। टास्क तो कोई दिया है नहीं वैसे मैंने, और इस सैटरडे वैसे आपको ऑफ है, कल दिया था तो हाँ, मैप तो ड्रॉ करना था ना ऑयल रिफाइनरीज और व्हाई दे आर लोकेटेड देयर ओनली। हाँ, रिसोर्सेस ऑफ, पर वो सैटरडे संडे करना है, चलो 3 इसमें करना है, तो कल 3 दिन वैसे भी ऑफ है ना, तो कुछ और भी टास्क दे दूंगा, तो
सैटरडे ऑफ है, सैटरडे संडे मंडे। चलो, थैंक यू एंड हैव a good time, all you guys watching online recording as well.